अच्छा, is my screen still on sharing? Yes, ma'am, it's saving. Yes, Okay. ma'am. No, ma'am. Yes, ma'am. Yes, ma'am. Okay. Yes, ma'am. Has the recording started? Yes, ma'am. Okay. Yes, ma'am. Are you Let me. okay? Can you see this figure drawn here? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Yes, ma'am. Here. Okay. Now we know that the earth is divided into two equal halves with the help of a 0-degree line called, come on, what is it called? Ma'am, equator. Ma'am, Very equator. Equator. Ma'am, equator. equator. Very good. So equator is the latitude. Equator is the latitude. Longitude. क्या चालू है? It is a longitude. 20. What is this? 23.5 degrees north. Ma'am, please tell everyone to mute. Tropic of Cancer. Okay. Then after that, what is this? 23.5 degrees south. Tropic of Capricorn. Tropic of Capricorn. Very good. Tropic of Capricorn. Six and a half degrees north. What is it called? Ma'am, North Pole. Arctic Circle. I'm not cool. This is called Arctic Circle, and this is called North Pole 90 degrees north. Okay. What is this called? Ma'am, Antarctic Ma'am, Circle. Antarctic Circle. Ma'am, Antarctic Circle. Very good. Antarctic Circle. And this is called South Pole, which is at 90 degrees. Now, what are these lines called? What are these lines called? Latitudinal lines. Ma'am, Latitude. And these are important. Latitudinal line. Yes. Ma'am, Now, latitude. suppose, very good. Now, supposing I place the place, tell me the location of A. So you will only be able to tell me, okay, this is 0, then 1, 2, 3, 4, 5, 9, 20, and 23. So you might say, okay, it is on 20 degrees north latitude. That means any place on 20 degrees north latitude could be A. But we need to know longitudes also. Now we know that Earth is easily divided into northern hemisphere and southern hemisphere with the help of an equator. But if we hold the Earth, we will see it round on all sides. So for longitudes, there is no such line which divides the Earth into equal half. So what happened was there was a place in Greenwich. What was the name? What is the place? Greenwich. GR. It's which नहीं कहते हैं, Greenwich. W is silent. Greenwich. Now this place is in London. Where is it? It is near London. Okay. It is near London. Now this Greenwich had an observatory, and people sitting there decided that we are going to pass the line from Greenwich. So
0-degree line was longitudinally drawn. Okay, was longitudinally drawn, and it was named as 0 degrees prime meridian. You all know that longitudes are also known as meridians. So 0-degree Yes, line ma'am. was drawn imaginarily, just as equator is also an imaginary line. But here it was drawn near Greenwich. It could have been drawn anywhere, maybe crossing Africa, maybe India, wherever, anywhere. But since it was happening in the observatory in Greenwich, so they decided that the line of 0-degree would pass from Greenwich. Okay. Was So all the places, now listen very carefully, all the places from the Greenwich, from this line, all the places lying towards this side were the western, and all the places this side were the eastern. Okay. Now, if you see this line 0-degree, if you keep your protractor here, ma'am, your you video is paused. No, ma'am. No, you ma'am. you No, will ma'am. your No, network ma'am. problem. Okay. So if you will see No, from ma'am. here down to the back side will be 180 degrees. इस सर्कल के पीछे की साइड पर यहाँ कहीं पीछे इसके पीछे होगा 180 degrees. You agree with that? Ma'am, I cannot see your screen. Child, जो सर्कल है उसके पीछे की साइड पर 180 डिग्री होगा. आगे 0 है तो उसके उधर 0 डिग्री. Suppose my hand is okay, and if my thumb is 0 degree, if my thumb is at 0 degree, if this is 0 degree, then line just behind it, this will be 180 degrees, this side will be 180, isn't it? Isn't it? Yes, ma'am. So, Yes, ma'am. and Yes, ma'am. that line which is behind, immediately behind the prime meridian is called international date line. So, international date line is at 180 degrees. 180 degrees वाली लाइन को क्या कहते हैं? International date line. Now, if you think, Ma'am, if I the, cannot see your screen. if the wait a second, switch off. All the videos should be switched off. Those who are on video mode, please switch off. Switch off the video mode right now. All have switched out the switch off the video mode. Yes, ma'am. Yes, ma'am. Okay. So now can you see? Now see, if this is 0 degree line, the line behind the circle would be the line of at 180 degrees. इसके पीछे वाली लाइन जो होगी वो 180 degrees की होगी. जैसे ये सर्कल है तो supposing my thumb is the 0 degree prime meridian line of a circle. तो इसके पीछे की लाइन कौन सी होगी? ये पूरा सर्कल घूम के ये लाइन पीछे की लाइन होगी ना सर्कल की. So this is 180 degrees. Just the behind of the circle will be 180 date line. Then they are telling you that the meridians, एक meridian, there are 360 meridians. That means 360 longitudinal lines. This line, then maybe this line, then maybe another line. And if you see all these lines, North Pole से South Pole आगे दिख रही हैं और पीछे South Pole से North Pole फिर जा रही हैं, making each an angle of 360 degrees. And they all are distance is more at the equator, and as they are moving towards the pole, they are merging together. Can you see? I'll show you in this one. Wait a second. Can you see here? All these lines, they are drawn here
and they Yes, merge ma'am. in the poles, merge at the poles. Okay. Now they are telling us that every 1 degree, that means ये तो 0 डिग्री है, इसके ठीक बगल में जो 1 डिग्री का डिस्टेंस है, तो फ्रॉम 0 डिग्री से 1 डिग्री पर आने के लिए अर्थ को 4 मिनट्स लगते हैं. हाउ मेनी मिनट्स? 4 मिनट्स. ओके. सपोजिंग आई एम द सन 4 नाउ. minutes. My hand is sun here. मान लो ये sun है. Sun is giving its light to the earth. Okay. Sun is giving its light to the earth. Now light is directly falling on the prime meridian. Overhead. Sun is right now overhead at the prime meridian. That means what time here it will be? 12 o'clock. 12 बज रहे होंगे दोपहर के. Clear? Now all the places to the west side, that means this side, all the places this side Yes. and behind till 180 degrees, they are behind the Greenwich time. Supposing यहाँ 12 बज रहे हैं, अब ये 1 डिग्री पीछे है, यानी कि 4 मिनट पीछे है. तो इफ 15 डिग्रीज होंगे, 15 डिग्रीज में कितना टाइम होगा? 15 into 4 minutes, that is 60 minutes. Now 60 minutes is equal to 1 hour. Okay. That means जब 1 hour. हाँ, जब 15 डिग्री की दूरी होती है, ठीक है, जब 15 डिग्री की दूरी होती है, तब 1 घंटे का डिफरेंस है. यानी कि जो प्लेस यहाँ होगी, यहाँ अगर 12 बज रहा है तो यहाँ क्या बज रहा होगा? 1 घंटे पीछे चल रही है. ये क्या हो रहा होगा यहाँ पे? Ma'am, 11. 11. Ma'am, 11 o'clock. Ma'am, 11 o'clock. ओके. नेक्स्ट 15 डिग्रीज पे क्या बज रहा होगा? नेक्स्ट 15 डिग्रीज पे क्या बज रहा होगा? जब यहाँ पे 12 बज रहा है, इस जगह 12 बज रहा है, इस पूरी प्राइम मेरिडियन पे सन फेस कर रहा है. यहाँ पे यहाँ पे 10 बज रहा होगा PM. इस नेक्स्ट 15 डिग्री पे क्या होगा? 9. 9 AM. नेक्स्ट 50 डिग्रीज पे क्या हो रहा होगा? 8. 8 AM. फिर नेक्स्ट 50 डिग्री पे 7. Ma'am, Ma'am, नेक्स्ट 7. नेक्स्ट 15 डिग्री पे क्या हो रहा होगा? Ma'am, 6. Ma'am, 6. 6. गुड. Ma'am, 6. नेक्स्ट 15 डिग्री पे क्या हो रहा होगा? यहाँ पर 5. Ma'am, 5. Ma'am, 5. 5. तो यानी कि यहाँ पर अर्ली. ओके. अब ये इधर का क्वेश्चन. अब ये बताओ, Ma'am, 4. यहाँ पे 12 बज रहा है, यहाँ पे 12 Ma'am, बज रहा है. Ma'am, 1. Ma'am, 1. वेरी गुड. यहाँ 1 Ma'am, बजेगा कि 1. इसका ये यहाँ पर इधर आके इधर जा चुका है. ठीक है. सो ऑल द प्लेसेस इन द ईस्ट विल बी अहेड 2. टू. वेरी गुड. Ma'am, 2. 2. 2 PM. देन ये 3 PM. Ma'am, 3. Ma'am, 3. 3 PM. Ma'am, Then 4. Ma'am, 4. Ma'am, Ma'am, 4. 5. 5. Ma'am, 5. 5. 6. Ma'am, 6. 6. यानी कि यहाँ Ma'am, पर 7. 10 Ma'am, 7. हो रही Ma'am, होगी, 7. यहाँ पे शाम हो रही होगी. Ma'am, ठीक है ना? 7. 7 PM हो रहा होगा. अच्छा. अब हमने ये देख लिया कि लॉन्गिट्यूड से हमें टाइम पता चलता है और लैटिट्यूड से लोकेशन. लैटिट्यूड एंड लॉन्गिट्यूड की दोनों की इकट्ठे हो जाने पे लोकेशन पता चलती है. अब हम एक ही लोकेशन आराम से ढूंढ सकते हैं. राइट. एक ही लोकेशन, एक ही लैटिट्यूड पे तो 20 डिग्रीज है. कैसे? ये देखो, ये डिग्री, फिर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 20. ये रहा 20 का लैटिट्यूड. तो ये रहा. अब लॉन्गिट्यूड में ये क्या है? 15 30 35. 35 डिग्रीज लैटिट्यूड ईस्ट में. 35 डिग्रीज. ये नॉर्थ, ये वेस्ट है, ये ईस्ट है. तो 35 डिग्रीज. तो अब एक ही लोकेशन क्या होगी? नॉर्थ में इट इज latitudinally it is 20 degrees north because it is lying in the northern hemisphere. ठीक है. 20 degrees north and latitudes में 35 degrees east. ये प्राइम मेरिडियन है, ये इसके इधर है, तो ये ईस्ट है.
इधर से लेके आधा उधर तक का, बस इसके पीछे तक का ईस्ट है, इधर से लेकर के इसके पीछे तक का वेस्ट है। ओके, ठीक 180 डिग्रीज पे क्या हो रहा होगा, ना नॉर्थ, सॉरी ना ईस्ट ना वेस्ट, उसको सिर्फ 180 डिग्रीज ही कहेंगे। और अगर यहाँ पर सुबह के 12 बज रहे हैं दोपहर के, तो इसके पीछे वाली लाइन में क्या बज रहा होगा दोपहर के, ओ दोपहर के कह रही हूँ, 180 डिग्रीज पे क्या बज रहा होगा, मैम रात के 12 बजे। 12. रात मैम के, 12 o'clock, मैम 12 p.m. वेरी गुड। अब हम फटाक से ये पढ़ लेते हैं, द वर्ड मेरिडियन मीन्स मिड डे, मतलब कि मेरिडियन का मतलब है कि मिड डे, यानी कि हर लाइन पे सूर्य, ये बिकॉज इट इज रोटेटिंग, तो हर मेरिडियन पे सन की रेज एक बार तो 12 बजाती है, इजंट इट। ये देखो ये 0 डिग्री प्राइम मेरिडियन है, फिर इधर की ओर वेस्ट है 30 डिग्रीज, 60 डिग्रीज, हर 15 डिग्रीज पे इन्होंने ड्रॉ किया हुआ है, 90 डिग्रीज, 120 डिग्री, 180, सेम हियर, 30 डिग्री, 60 डिग्रीज, 90 डिग्रीज, 120, 160, 180। और ये देखो पोल है, ये भी है, और ये साउथ नीचे है। ओके, ये places which have their own moon at the same time. The longitude of a place, therefore, can be defined as the distance of that place east or west of the meridian of Greenwich measured at an angle. तो ये मेरिडियन के इधर जो भी प्लेसेस है वो वेस्ट की हैं, पीछे तक का टिल 180 डिग्री, इधर की जो प्लेसेस है वो पूरी ईस्ट है टिल 180 डिग्री है। ओके, नाउ 180 जो डिग्री है दैट इज कॉल्ड द लाइन which is known as international date line. Now how do you locate places? अब उन्होंने बताया मुझको मुंबई इज एट 1855, अब यहाँ पे लिख लो जरा, अपने पास भी कहीं लिख लो, मुंबई 18 डिग्रीज 55, इन्होंने क्या बताया है, नॉर्थ, राइट, एंड 72 डिग्रीज 54 ईस्ट। यानी कि अगर हम यूं ही बना लें एक मैप, एक ऐसी अर्थ बना लें, तो मुंबई जो है पहली बात तो नॉर्थ में आएगा, इस कहीं एरिया में आएगा, और अगर ये प्राइम मेरिडियन है तो ये वेस्ट साइड है, ये ईस्ट है, यानी कि मुंबई इतने एरिया में कहीं पे तो है। ठीक है, अब इन्होंने कहा 18 डिग्रीज, ये 0 डिग्रीज है, तो हमने 1 2 3 4 10 20 20, अगर ये है तो 18 उससे नीचे होगा, तो इस पूरी लाइन में कहीं पे तो होगा मुंबई। अब हमने लैटिट्यूड्स को देखा, अगर ये 15 डिग्रीज का लैटिट्यूड है और ये 20 डिग्रीज, नहीं ये 30 का है मान लो, ठीक है, तो 30 और 20 के बीच में, 15 एंड 30 के बीच में, 15 के नेक्स्ट 16 17 18, 18 कहीं यहाँ कहीं आएगा 18। अब इस लाइन को और इस लाइन को मिला दो, ये वो जगह है जहाँ पर 18 डिग्रीज और 70, ओ ओ ओ 72 बोला है, सॉरी 72 है, तो ये 30 हो गया, फिर ये और बढ़ा, सपोजिंग ये 60 है, फिर ये है 90। ओके, तो ये 60 डिग्रीज है, ये 90 डिग्रीज है, तो 60 के बाद आता है 70 72, ये यहाँ कहीं होगा, दिस इज द प्लेस वेयर ए इज। ओके, मुंबई इज। अब नाउ एक सेकेंड, अब देखते हैं मैप पर, ऑल ऑफ यू हैव योर एटलस, एनीवन हैज एन एटलस, चलो छोड़ो, Yes, ये हम, ma'am, I have. Yes, अभी ma'am, I have. अच्छा चलो, इंडिया का मैप खोल लो जल्दी से, अब Ma'am, I also have. देखो, सब लोग अभी मेरे में Yes, I also have. इसमें टाइम वेस्ट मत करो कि who has and who doesn't। अब मैं बोला है मुंबई है 18 डिग्री नॉर्थ, यानी कि लैटिट्यूड में देखना है, लिखी हुई लाइन है। तो अब यहाँ पे देखो क्या लिखा है, 20 17, Ma'am, your voice is not coming. ये 18 डिग्रीज यहाँ है,
Ma'am, your voice is not coming. Ma'am, your voice is not coming. Ma'am, your voice is not coming. Ma'am, your screen is also not sharing. Ma'am, your screen is also not sharing. Ma'am, you are not. Your screen is also not sharing. Ma'am, you are not audible. Ma'am, you are not